So I am Dr. P.S. Grover. Rotary ਦੇ ਵਿੱਚ there is a district, Rotary District 3070, which includes almost half of the Punjab, Khanna onward towards Amritsar, जी सर कंटिन्यू and Himachal Pradesh up to Manali, J&K full and Leh and Ladakh. So in all these four states, there are Rotary clubs. There are about 120 Rotary clubs in District 3070. District 3070 in Rotary, it is a name which is based upon the digits, because it has not been given the name so that there should not be any guesswork whether it belongs to which religion or which country or which nation. So Rotary is a totally different type of NGO, non-government organization, and it is our honor and privilege that Rotary is in almost 200 plus countries, which is even the World Health Organization. It has got its members which are about 200, and Rotary is also in the uh, NGO as a number one NGO, and its mega projects in the form of Rotary Foundation. It goes into crores and millions of dollars, in which they are doing the grants, the global grants, and other community service projects. Polio is one of the most glaring example that Rotary took part right from 1985 onward for the eradication of polio from all over the world, and the Rotary is quite successful in that, and we are proud of that. सर आज इवेंट हमारे व्यूअर्स और अश्विनी जी I think even the governor official visit, every governor is required to visit all the clubs in his tenure of 12 months. My tenure started from the 1st July and it will end up to 30th of June 2025. So this visit to all the clubs, particularly this Rotary Club Ludhiana Midtown, which is the biggest club of our district with its members around about 100 members in one club, and this is an glaring example that so many members are there, and that is the strength of a club. And all the members are very influential people of Ludhiana. They are all professionals, they are businessmen, they are CAs, doctors, architects. So they are all under one roof, and they are all working for the cause of social reform and community service. Welcome our chief guest, Rotarian Dr. P.S. Grover, District Governor and Installation Officer of this event. So I feel proud to be president of this prestigious club, Rotary Club of Ludhiana Midtown. We are having about 100 members. Our club is the largest club in our district 3070. So we have already done two projects. One is Annapurna Day, and the another is we have done the tree plantation day. So members in huge number attended those projects. तो मैं अपने मेंबर्स का साथ सपोर्ट आगे भी मैं चाहूँगा कि ऐसे ही जिस तरह से किसी क्लब में गवर्नर साहब 50 मेंबर्स नहीं होते, तो हमारे जो प्रोजेक्ट्स पर हैं मोर देन 50 जो मेंबर्स हैं हमारे प्रोजेक्ट्स पर आते हैं. तो इट्स प्राउड फॉर मी ऑल्सो एंड प्राउड फॉर यू ऑल्सो कि इट्स द लार्जेस्ट क्लब ऑफ द डिस्ट्रिक्ट. तो मैं सभी को एक बार मैं थैंक्स करता हूँ कि जिन्होंने मेरे को एक प्रेसिडेंट के रूप में देखा. तो आई विल fulfill my all the responsibilities with dedication, dignity and enthusiasm. Thank you. क्या ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੈ ਆਪ ਕਿ ਅੱਛਾ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਆਪਣੇ ਕਲੱਬ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਕਿ blessed to be our governor Mr. Dr. P.S. Grover in between us. एंड पिछला साल हमारा बहुत बढ़िया रहा. उसमें हमारी टीम का, हमारे मेंबर्स का, सबका बड़ा अच्छा योगदान रहा. और हमने ऑलमोस्ट 12 जनरल बॉडी मीटिंग करी और बहुत सारे सर्विस प्रोजेक्ट्स करे. और इसमें हमारी सबसे बड़ा योगदान हमारी टीम का, सारे मेंबर का रहा.
आते ही गवर्नर साहब ने कहा कि जनरली क्या होता है कि एक टीम आती है तो वो कुछ मेंबर नहीं आते हैं, वो टीम जाती है तो साथ में वो प्रेसिडेंट के साथ चले जाते हैं। तो आई कैन प्राउडली से कि यानी हम लोगों ने एटलीस्ट मैंने, हमारी टीम ने सारे पुराने मेंबर रिटेन भी करने की कोशिश करी है और आज भी कुछ नए मेंबर भी लेके आए हैं और वो हम पुराना सिस्टम को तोड़ना चाहते हैं, ख़त्म करना चाहते हैं। और मैं आने वाली टीम को, अश्विनी जी को, रैयन को, आतिफ जी हमारे सेक्रेटरी साहब और तैयार हमारे विकास सीए जी को, सबको वो मुबारकबाद देना चाहता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ कि आने वाला टाइम उनका बहुत बढ़िया साथ है। थैंक यू।